So we are in a 12 to 4 midnight watch, and as you can see, there's an alteration coming. So right now we are at the heading of 313, and we have to go to 002. That is, we have to alter north. And there are two options for doing this: either by the autopilot, we just keep giving the commands, or by manual hand steering, which is more precise. Now, before altering, we have to check that the course on which we have to alter is clear, and we have to check our port side and starboard side. That should be clear, and our port quarters and starboard quarters should be clear. And then, yeah, we will be altering it by manual. As you can see, we do have some coming down traffic from our starboard side, but since our track is clear, it's not going to be an issue to alter it. You can see we are in the port right now, and the main things which we have to look in the watch is the mooring operations. Okay, we have to check that all the mooring lines are in perfectly good weight, so that कोई भी lines ना ज़्यादा slack रहे या फिर ना ज़्यादा उनमें weight रहे. So as you can see, all these lines, they are in perfect weight. यही check करना रहता है, and then if we need to adjust them, we adjust by the mooring winches. And the second thing, and which is like the main thing, that is the cargo operation. Now, मैं ज़्यादा नज़दीक जा नहीं सकता, but I'll try to zoom it in and I'll show you. So as you can see, there is a Jixon arm connected to our ship. As you can see, that is the Jixon arm. So basically, just look at it in this way कि चलो हमारे पास let's say तीन पानी की टैंक्स है जिनके ऊपर मोटर्स लगे हैं, एंड देन वो मोटर्स रन करते हैं, एंड देन दे डिस्चार्ज दैट वाटर थ्रू द जिक्सन आर्म, एंड वो जितना भी हमारे पास कार्गो है या जो भी है वो हम शोर को दे देते हैं. नाउ इंस्टेड ऑफ वाटर वी डोंट हैव ऑब्वियसली वाटर, वी हैव अमोनिया, वी हैव लोडेड अमोनिया. सो बेसिकली जब आपका कार्गो अमोनिया है और बेसिकली एनी टाइप ऑफ गैस, द मेन थिंग विच वी हैव टू लुक इज़ फॉर द प्रेशर एंड द टेम्परेचर ऑफ द कार्गो. तो बस वही है, हर एक टैंक के ऊपर मोटर्स लगे हैं which gives it a flow, which gives it pressure, and उस pressure से हम ये Jixon arm से we transfer all the fuel and all the cargo which we have in our tanks to the shore. So basically हमें यही सब monitor करना रहता है. Before watch is over, and now I'm just going to go and rest. But one more work which I would like to talk about is the gangway watch. So as soon as we come inside the boat and we make fast our ship, तो मेन सबसे पहले काम होता है इज़ टू कनेक्ट द गैंगवे. गैंगवे इज़ लाइक एक लैडर की टाइप समझ लो. ये होता है थ्रू विच अ शिप एंड द शोर इज गेट्स कनेक्टेड, जिसके ऊपर से लोग आते हैं जाते हैं, लाइक सो व्हाट वी हैव टू डू इज लाइक वी हैव टू मेंटेन अ गैंगवे वॉच all the time while we are in the boat. Like you cannot just leave the gangway unmanned, because chances क्या होता है कि हो सकता है कि आपके शिप पे कोई एक बंदा चढ़ जाए और आपको पता भी ना चले. Sometimes people do try to leave their countries and go in some other countries illegally. So बहुत बड़ा इशू हो जाता है, बहुत बड़ा केस बन जाता है, and then जवाब देना पड़ता है, because it's literally like you are transferring a human being illegally from one country to another country. So companies को भी काफ़ी जवाब देने पड़ता है and crew को भी काफ़ी जवाब देना पड़ता है. So make sure you maintain a good gangway watch, and just you have to do the NTs, whoever is coming on board, and before leaving the ship you also have to make sure that every single person who came from the shore has already left the ship, and then only you can just cast off and continue with the sailing. What's up? Good morning. 11:15 AM हो चुकी है. Time to get up. And आज का मैं वेदर बता देता हूँ आपको. Just look. So right now we
we are crossing the beautiful Istanbul Canal and I just finished off my steering और ऊपर कैमरा लगा है so that we can record a good time lapse and let me just take you out. So here it is. दिस व्लॉग बिकॉज इससे ज़्यादा अभी और मैं क्या ही रिकॉर्ड करूँ. आई नो व्लॉग्स अभी प्रॉपर है नहीं बट ठीक है गाइस, अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है एंड टाइम लगेगा बट ठीक होगा. आगे द व्लॉग्स विल बी मच बेटर एंड या जस्ट मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर एंड ऑल्सो फॉलो मी अप ऑन इंस्टाग्राम क्योंकि वहाँ पे जो कंटेंट है एज आई ऑलरेडी सेड वो मैं यहाँ पे कभी पोस्ट करता नहीं हूँ. And the content over there is different from the content which I post on YouTube. So make sure you check it out over there too. See ya.